Okay, good evening to everyone. PDF will not be given during the class. PDF will be given after the class. It is the illusion. Okay, let's start the session and let's rock the session today. The Digital Personal Data Protection Bill. So there are many kinds of protection and one of them is data protection. इतना मुश्किल होता है ना अपने आप को रोक के रखना. चलिए बहुत बढ़िया. ये तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वैसे, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो. Okay, why in news? Recently, Lok Sabha, lower house, passed the Data Protection Bill, India's second attempt in framing a privacy legislation. Legislation means law. हाल ही में लोकसभा ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को पास किया है और ये इंडिया का दूसरा ऐसा प्रयास है जिसमें प्राइवेसी से रिलेटेड एक लॉ बनाया गया है. डाटा प्रोटेक्शन बिल को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कहा गया है और इसलिए इसको शॉर्ट में पीडीपी एक्ट भी कहते हैं. वैसे पीडीपी एक पार्टी का नाम भी है जिसकी अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती. एक वर्ड आता है इसमें डाटा फिड्यूशरी. डाटा फिड्यूशरी इज अ टर्म हु डिसाइड्स द पर्पस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग का आखिर पर्पस क्या होगा इसका डिसीजन ले गया. नेक्स्ट इज डाटा प्रोसेसर. भाई शांत बैठ जाए यार मलिक साहब, अब हंसी आ जाएगी. काम का रिकॉर्डिंग हो रही है. बात तेरी ठीक है बट फिर मेरे दिमाग में भी चार चीज आ जाती है यार. Data processor who processes data on behalf. Data principal, it is the individual whose data is processed. Data processing is personal data and sensitive personal data, and critical personal data is categories of data which require most protection as defined by PDP Act. So this is called critical personal data. So what is the history of data protection bill? India does not have a stand-alone law on data protection. Use of personal data is regulated under the Information Technology Act 2000. So here there is one more question. What is IT Act 2000? First question. Write down. And look for it. In 2017, so central government constituted one committee and the name of the committee was B. N. Sri Krishna. Tell me verbally, B. N. Sri Krishna. B. N. Sri Krishna. Everyone, B. N. Sri Krishna committee. In which year? 2017. आप अपने आप से बोलते रहो, मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं, खुद से बताओ, रिवीजन हो जाएगा. It was to examine issues relating to data protection in the country. Based on the recommendation of the committee, the Personal Data Protection Bill 2019 was introduced in Lok Sabha. So before 2023, it is the second attempt of PDP Act. What was the first act? It was in 2019. Okay. It is formulated based on the data regulation of European Union General Data Protection Regulation GDPR, which empower citizens to have a greater say in how their online data is used. So our PDP Act is just the copy paste of European Union's GDPR. Okay. It has been imitated from GDPR. यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो यूरोपियन यूनियन द्वारा जो कानून बनाया गया है
डाटा रेगुलेशन का, उससे प्रभावित है, उससे हमने कॉपी पेस्ट किया। अब जर्नी ऑफ बिल क्या रही, क्योंकि 2017 में BN श्री कृष्णा कमेटी बनी और 2019 में उसकी रिकमेंडेशन पर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। तो 2017 में प्रिवेसी एज ए फंडामेंटल राइट रीअफर्म्ड इन जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाय सुप्रीम कोर्ट। फिर जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी constituted VN Shri Krishna to examine data protection issue, and July 2018 committee releases draft of personal data protection bill and reported. So in December 2021 JPC, okay, so first ये ऐसे चल रहा है थोड़ा सा. So in December 2019 revised draft bill sent to joint parliament committee which is called JPC for both houses to review, and then in December 2021, JPC released its report and a new version of law as the Data Protection Bill DPP. And in July 5, 2023, Union Cabinet approved the draft DPDP Bill 2023. And before that, in August 2023, DPB bill was withdrawn. And in November 2020, MITI release Ministry of Electronic released draft digital personal data protection bill for public consultation, and now it is approved by Union Cabinet, and on 9th of August it has been passed and ratified by the Lok Sabha. Yes or no? And now 3 days back on 13th of August, the President of India has signed it. So now it has become the law. So जब बिल पर साइन हो जाते हैं राष्ट्रपति जी के, तो ये क्या बन जाता है, लॉ. तो फिर दुनिया के क्या लग जाते हैं, वो कानून बन जाता है. ठीक है, बहुत बढ़िया. What are the key features of the bill? This is very, very important question. Key feature. What do you know about personal data protection bill? Personal Data Protection Bill. So it is PDPB. Personal data is defined as any data about an individual who is identifiable by or in relation to such data. So please learn this definition now. You have 15 seconds. Everyone, please read it out 3 or 4 times. Personal data is defined as any data about an individual who is identifiable by such data or in relation to such data. ऐसा कोई भी डेटा, ऐसा कोई भी आंकड़ा किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जो इंडिविजुअल पहचाना जा सकता है उस डाटा के संबंध में. वो आपकी फोटो, आपकी पिक्चर, आपका कोई भी घर का पता, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कुछ भी हो सकता है. Everybody has to write so that whenever you write, the propensity to learn them and retain them into your mind will be very high. Okay. नींद आ रही है छोटे बच्चे को आज? हाँ, मैंने देख लिया है तेरे को उबासी लेते हुए. Now, should I move on like you usually move on? Okay. After the definition, what is the applicability of this bill? The bill applies to the processing of digital personal data within India, where such data is collected online or collected offline and is digitized. ऐसे डाटा जो इंडिया के अंदर पर्सनल डाटा है, जिसको या तो ऑनलाइन कलेक्ट किया गया है या फिर जिसे ऑफलाइन कलेक्ट करके और उसको ऑनलाइन किया गया है, यानी डिजिटाइज्ड किया गया. It will also apply to the processing of personal data outside India if it is for offering goods or services in India. जितना भी पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया लिया गया है, जो कि अपनी गुड्स या सर्विसेज इंडिया में दे रहा है और इंडिया का डाटा बाहर ले जा रहा है, इसको भी ये एप्लीकेबल मानेगा ये कानून.
अब मान के चलो अमेजन कहाँ की कंपनी है, अमेजन इज रिलेटेड टू विच कंट्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स. और whenever you purchase any item from Amazon, so you have to make one account on Amazon before buying or purchasing anything. Yes or no? And you have to fill some information like your phone number, email ID, OTP, password, and sometimes you have to fill your card detail also. Yes or no? These are all personal details, but they are sent back to the US country. But Amazon is selling or providing some goods and services here in India. So through India, they are seeking some information or taking some information. Okay, very good. USA or America, very good, very good. So every time you need to have the consent. Consent is very important nowadays. One day I was listening to the interview of Shah Rukh Khan, and he told the anchor that he take the consent or he take the permission before entering his wife's room, because everybody has some privacy. Yes or no? So consent must be taken. हो गई क्या प्रोसेसिंग तुम्हारे दिमाग की? आगे बढ़ो, या मुस्कुराना है तो मुस्कुरा लो. Personal data may be processed only for a lawful purpose after obtaining the consent of the individual. इंडिविजुअल की कंसेंट को ऑब्टेन करने के बाद लॉफुल पर्पस के लिए पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है. फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 18 years of age, consent will be provided by the parent or the legal guardian. जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके जो कंसेंट है वो पापा मम्मी देंगे या जो भी उनका लीगल गार्जियन होगा वो देगा. कंसेंट में बी विथड्रॉन एट एनी पॉइंट इन टाइम. अगर आपने एक बार कंसेंट दे दी और आपको लगता है ये तो अपने से गलत हो गया, तो आप अपनी कंसेंट को विथड्रॉ भी कर सकते हो कि नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, जो भी बोलना. जी एस अखिलेश, ज्यादा हिंदी समझ में आ रही बेटा तेरे, बहुत बढ़िया. चलिए, फिर है राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल, एंड सी द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल. सो डाटा प्रिंसिपल इज एन इंडिविजुअल. ये डाटा प्रिंसिपल बोला गया है एक ऐसे इंडिविजुअल को whose data is being processed. See, I have Anshul Rohila and I have his personal information. So according to data protection bill, Anshul is called data principal because his data is being processed and he or she will have the right to obtain information about processing. भाई तुम प्रोसेस क्या कर रहे हो, मेरे को ये बताओ, कैसे प्रोसेस करोगे? कई बार नहीं होता, फोटो खींच रहा है कोई किसी की और बाद में चेहरा तो आपका लगा दिया, ऊपर से तो अंशुल रोहिला, नीचे से आलिया भट्ट, तो फिर चल हट वाली बात हो जाएगी. तो आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो उस डाटा को, ये भी देखना पड़ेगा. दूसरा, टू सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डाटा. अगर आपको लगता है कि ये आलिया भट्ट गलत छपी है, यहाँ पर कोई और सनी देओल होना चाहिए था, तो आप करेक्शन करवा सकते हो. या आपको लगता है कि यहाँ सनी देओल नहीं होना चाहिए था, यहाँ इरेज भी करवा सकते हो. नहीं नहीं, सनी देओल ही ठीक है, और कोई सनी नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, to nominate another person to exercise rights in the event of death or incapacity. अगर आप इनकैपेसिटी है, अगर आप कैपेसिटी खत्म हो गई है, अगर आपकी, आप बीमार हैं, बुखार है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं या आपकी डेथ हो गई है, तो आप उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सरसाइज कैसे हो रही है उसके लिए आप किसी अन्य इंसान को नॉमिनेट कर सकते हैं.
and data principal has a right of grievance redressal. अगर उसको कोई दुख दर्द है तो उसका रिड्रेस किया जाएगा, उसके कष्टों को खत्म किया जाएगा। ऐसे बीच बीच में जाना नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, करंट अफेयर तो ये सेशन रोज चलेंगे। अब नाउ ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, ये तो हो गए राइट्स, आपके अधिकार क्या है। अब आपके कुछ ड्यूटीज भी होंगे अंशुल के। अंशुल must have register a false or frivolous complaint. He must not register a false or frivolous complaint. What is the meaning of frivolous? Something not serious. ऐसे ही कोई भी कंप्लेंट नहीं जमा करवानी है, क्योंकि डाटा के ऊपर डाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यस और नो? फॉर he must not furnish any false particulars or impersonate another person in specified cases. Anshul is filling the form for driving license digitally. Only the name of Anshul is okay, and rest of the things are related to Indira Gandhi. So it is something you are falsely impersonating yourself. Yes or no? This is just the example. Like in 2019, there was a report in the Hindu. There was one person whose voter ID card has the photo of Rahul Gandhi. So he gave the photo of Rahul Gandhi, or somehow it has been shown on his voter ID card. And if data principal must not, so there is a violation of duties will be punishable with a penalty of up to 10,000. तो सरकार देखो कितनी इनकम कर रही है। अगर आप गलत भर दोगे कुछ भी खबर तो आपके 10,000 रुपए लग जाएंगे। और आजकल तो कुछ भी कर लो 10,000 रुपए लग ही जाते हैं। अभी मैं 10,000 रुपए वाला सवाल भी पूछा था। फिर यस, अब ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूशरी? First of all, who is data fiduciary? Who is data fiduciary? Data fiduciary is the entity determining the purpose and means of processing. Means it is the government or government body. Sorry. It is not the government body. It is the middleman. It is the Facebook. It is the Twitter. It is the Instagram. Who is actually taking your information? So data fiduciary must make reasonable efforts. कहाँ टाइपिंग मार रहे हैं अंशुल को? पेन वहाँ है, कॉपी वहाँ है। Make reasonable efforts to ensure the accuracy and completeness of data. So one must make reasonable efforts to ensure accuracy of data. Okay, this is very good. Yeah, Varshist is saying right. Deepika Padukone face was there in one person's voter ID photo card. Oh my God, glamorous voter ID. Now, data fiduciary must build reasonable security safeguard to prevent a data breach. अब जो फेसबुक ने तुम्हारा डाटा इकट्ठा किया है, अमेजन ने तुम्हारा डाटा इकट्ठा किया है, वो खुद ही सिक्योरिटी सेफगार्ड बनाएगा ताकि कोई डाटा ब्रीच ना हो जाए, वायलेशन ना हो जाए. And he must also inform the Data Protection Board of India. So there is a constituting of Data Protection Board. Now, Data Protection Board, which will collect the whole data, जिसके पास सारा डाटा रहेगा. जैसे ब्लड बैंक होता है, ऐसे ये डाटा बैंक हो जाएगा. And affected persons in the event of breach. So डाटा फिडुशियरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बोर्ड को, और जो भी पर्सन का डाटा चोरी हुआ है, ब्रीच हुआ है, उसको कि भाई साहब हमसे गलती हो गई है,
अब ये आपको संभालना पड़ेगा ये गलती। अगला देखिए, erase personal data as soon as possible, as soon as the purpose has been met and retention is not necessary for legal purpose. रिटेंशन उसको रखने की जरूरत नहीं है लीगल पर्पस के लिए, उसको हटा देना, मिटा देना जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, अगर कोई डाटा स्टोरेज करने वाली गवर्नमेंट एंटिटीज है, storage limitation and the right of data principle to eraser will not apply. It means it will only be applicable to private entity. The government entity will not be allowed to erase that personal entity. आप कल को यूं कहो मेरे जो आधार कार्ड में आपने जो मेरी आंखों के साइन लिए थे वो आप हटा दो, तो भाई उसको हटाते तो आपका आधार कार्ड ही नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा, कैसे और नो? तो वो नहीं कर सकते आप, जो गवर्नमेंट की चीज है वो रख सकते हैं, वो मोदी जी यूज करेंगे। नाउ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया, it allows transfer of personal data outside India except to countries restricted by the central government through notification. So timely or time to time the government of India will give some notification which countries are restricted to transfer some of the personal data from India to outside India. Yes or no? So they will be given in the notification. Sir, if our data is stolen somehow from Data Protection Board, will government pay 10,000 to us? Yes, 10,000 and money back guarantee. कुछ लिमिटेड डाटा को ही गवर्नमेंट भी यूज ही कर सकते हैं पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बताकर। यस, मिसयूज तो होता ही है, देखो कुछ ना कुछ तो लूप होल होते ही। अब जब आपको इसके प्रॉज पढ़ने हैं तो गवर्नमेंट की बात सुन लो, और कौन सुनने तो कांग्रेस की बात सुन लो, सब तैयार हो गया है। सो देर आर सम एग्जाम्पशंस। नाउ एग्जाम्पशन में ईडी और सीबीआई को देखो क्या छूट दी गई होगी। एग्जाम्पशन का मतलब होता है कंसेशन, कितनी सारी छूट दी गई है। Rights of data protection or data principle and obligations of data fiduciaries will not apply in specified cases such as prevention and investigation of offenses. Offense कोई घटना हो रखी है, कोई दुर्घटना हो रखी है, कोई ऑफेंस हो रखा है, अपराध हो रखा है और अपराध का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब ये शामिल नहीं होगा। और एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स और क्लेम, और जब आप अपने कोई कानूनी अधिकार का या दावों का इस्तेमाल कर रहे हो उसके एनफोर्समेंट के समय भी इनका यूज नहीं हो सकता। दिस बिल कांट स्टॉप पेगासस। यस, या अदर देन पाक एंड चाइना। जो भी हॉस्टाइल कंट्री है जहां से हमें डाटा ब्रीच का खतरा रहता है उसको नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम टू टाइम बताता रहे। Central government may exempt certain activities in the interest of the security of the state and public order. और ये बोल के कुछ भी ले लो, भैया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, आज इंटरनेट बंद रहेगा, होता है ना, इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, तो ये सिक्योरिटी बोल के ये भी कर लेंगे कि नहीं ये डाटा तो हम ही रखेंगे, तुम्हें नहीं देंगे, वी विल नॉट प्रोवाइड दिस डाटा टू यू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। यस और नो? सो समहाउ government can misuse it, but don't claim it, misuse it, okay, because you are going to face the interviewer who is an IPS officer who must be dealing with national security. Yes or no? So don't claim negatives first, claim the positives first, okay. And also government may exempt certain activities for research, archiving or statistical purpose. कोई शोध कर रहा है, कोई उसको पुराने सभागार में रख रहा है, या कोई आंकड़ों की बाजीगरी के लिए रख रहा है सांख्यिकीय आधार पर, उनके लिए भी एग्जाम्पशंस मिल जाएगी। आ रहा है समझ? Sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, maintenance of public order to any offense.
अगर ये सब चीजें हैं तो हम उस देश के साथ साझा कर सकते हैं, यही है ना? हाँ ठीक है रोहिला साहब। ओके सो हम पढ़ रहे थे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड तीन काम करेगा। फर्स्ट, मॉनिटर कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। कंप्लायंस का मतलब जो कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, मॉनिटर करेगा। और जो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा उस पर पेनल्टी ठोकेगा। सेकंड, डायरेक्टिंग डाटा फिडुशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन द इवेंट ऑफ ए डाटा ब्रीच। जो भी अमेजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम होगा, जो भी डाटा इकट्ठा कर रहा है प्राइवेट एंटिटी, फिडुशरी कहलाता है ना वो, अगर उसने कोई भी ब्रीच किया तो उसको बोलेगा कि भाई ठीक से काम कर, नहीं तो देख लियो। और जो भी लोग हमारे होंगे, जैसे हमने बोला डाटा प्रिंसिपल, उसकी तरफ से जो ग्रीवियंस आएंगे उसको रिड्रेस करेगा। सबके समझ में आ रहा है? आप देश के गृह मंत्री बन सकते हो बहुत जल्दी अगर आपके ये समझ में आ रहा है। बस आपको बाल मुंडवाने की जरूरत है। और तन्मय क्या हाल है? तेरा दिमाग दिख रहा है, सॉरी घुटना दिख रहा है, सॉरी। नाउ अपील करनी है। छक्का चौका जाने पे जैसे अपील करते हैं वैसे आप भी अपील कर सकते हो। द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड कैन बी अपील्ड। जो भी डिसीजन बोर्ड ने डिसीजन लिया उसको भी आप अपील कर सकते हो। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड appellate ट्रिब्यूनल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रिब्यूनल especially for data protection bill? This is telecom dispute settlement and appellate tribunal. Repeat it three times. Telecom dispute settlement and appellate tribunal. Try the short form. TDSAT. Now close your eyes. T means telecom, D means dispute, S means settlement, A means appellate and T means tribunal. हो गया याद? हाँ तुरंत याद करना है। देखो इसके लिए ऐसे नहीं करना कि सर अभी हमें 4-5 दिन लगेंगे। Everything is written in English. I'm using both the languages, Mr. Sarath. So we have this combined batch together. So Hindi and English people are there. So I'm switching from English to Hindi and Hindi to English. So I'm using both the languages. If you find any problem or glitch anywhere, then you can come to me directly or in the chat box. I'll personally help you, Mr. Sarath. Okay. Okay. So there is a penalty and reason. Penalty of 200 crore, 200 crore penalty. What is the reason? For non-fulfillment of obligation for children. अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई काम किया राज कुंद्रा ने बिना पूछे। राज कुंद्रा कौन है? हस्बैंड ऑफ शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी हस्बैंड। सब पता है भाई साहब। तो उसने अगर कोई भी चीज ऐसी की तो वो 200 करोड़ लगेंगे। फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डाटा ब्रीच। एक बार आप असफल हो गए, for once you are unsuccessful and you have been told to take security measure, even after being told several times you get failed, then the penalty of 250 crore will be imposed. Yes or no? Yeah, involved in pedophile or soft porn like ulu, ULLU something. Yes Kanchan, yes Sarath. Okay, so what is the significance of the bill? It is related to multi-pronged approach.
This framework encompasses various legislative measures such as Digital India Bill that would replace existing Information Technology Act 2000. It will draft Indian Telecommunication Bill to 2022, and it will address policy addressing the governance of non-personal data. Now, the other concern is privacy issue. Privacy is it will enhance the privacy cognizance of Indian citizens through transformative accountability measures to be adopted by enterprises or private entities. अभी तक प्राइवेट एंटिटी आपके डाटा के साथ क्या करती थी नहीं पता, बट इस कानून के आने के बाद वो थोड़ी सी सख्ते में रहेगी, थोड़ी कंट्रोल में रहेगी. Compliance. It is due to robust or strong protection and security measures combined with effective privacy policies and grievance redressal mechanisms. The compliance must be 100%. And if there is data breach, multiple exemptions were provided to prevent data breaches, such as privacy breach in CoWIN portal, where the personal details of vaccinated users had been leaked on Telegram, and 12,000 confidential records of State Bank of India employees were reportedly made public on Telegram. So on Telegram, there are many issues of leaking, and that is why we make premium group on Telegram for paid batch. But I think you all know, we just share the link of the batches. We don't share any PDF there. Yes or no? Such breaches are later used by scammers. Very good, very good, very good. दिमाग तो चलने लग गया है इसका 4-5 दिन में. दिमाग तो था इसका, लोड कर रखा था काम का. So according to data from United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, UNCTAD, 137 out of 194 countries have put in place legislation to secure the protection of data and privacy. Means there are 3/4 of the country which have secured the protection of data and privacy. Okay. So what are the issues with the bill? Now, something negative or some suggestions where a government has to work more on the concept or the bill. First is Article 21. It violates the fundamental right to privacy because of the exemptions provided to the state on grounds such as national security. So now it is related to IB or not. If IB wants the personal information about some person, then they may reach to the Data Protection Board, and then Data Protection Board will give the IB the exemption or the concession that you can use their personal data. But sometimes it is very much necessary for intelligence bureau or our law enforcement bodies. We cannot deny the fact, because there is no religion of scammer. वो कुछ भी कर सकता है भाई. The second issue with the bill is regulation. The bill does not regulate risk of harms arising from processing of personal data. Personal data को process करके जो harm की जो risk हो रही है उसको regulate करता ही नहीं है ये. इसका मतलब ये हुआ कि processing करते वक्त जो कंपनी काम कर रही है उस वक्त उसने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में कंज्यूमर को अगर नॉलेज नहीं है तो वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, तो भी कोई उसके ऊपर कोई बड़ा चेक एंड बैलेंस नहीं आने वाला. एंड थर्ड थिंग इज राइट्स.
The bill does not grant the right to data portability and the right to be forgotten to the data principal. ये बिल कोई भी अधिकार नहीं देता कि इस डाटा को पोर्टेबल किया जा सके या एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन टू द डाटा प्रिंसिपल, छोड़ा जा सके कुछ ना कुछ। इसको एक बार एज इट इज याद कर लेना। So what is right to data portability and right to be forgotten? The right to data portability allows data principal to obtain and transfer their data from data fiduciary. So data fiduciary is like Amazon and data principal is like Anshul. So right to data portability allows Anshul to obtain his data from Amazon and to transfer his data to Amazon. Yes or no? It is obtained for their own use in a structured, commonly used and machine readable format. It gives the data principal greater control over their data. मतलब तुम्हारे डाटा पर तुम्हारा कंट्रोल ज्यादा रहेगा, ना कि उस फिड्यूशरी का। प्रिंसिपल का ज्यादा रहेगा, ना कि फिड्यूशरी का। ठीक है, फिड्यूशरी फद्दू रहेगा, अब याद रहेगा। Oh my God. Right to be forgotten. What is that? It refers to the right of individuals to limit the disclosure of their personal data on the internet. लिमिट लगाएगा कि भैया मेरी जो बातें हैं तुम कहाँ तक पहुंचा सकते हो और कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, अगर पहुंचानी भी है तो एक लिमिट रहेगी, उसके बाद आपको भूल जाना है। In Telegram, through VPN, groups are created by extremist organizations to radicalize people after luring vulnerable youth in online platforms like Facebook or Instagram, and also channelizing OTF, one-time finance, by people who don't want involved directly but want to join the cause. It becomes a Herculean task for IB to track them down. Okay, so I'm just copying and paste what Rishi has given me as the main concern over the thing. Please note it down or just copy paste or just take the screenshot of what I have just posted in the chat box. This is a crucially important thing. Personal data outside India. What is the next concern or next issue? The mechanism may not ensure adequate evaluation of data protection standards in the countries where transfer of personal data is allowed. So whichever countries are there which get the permission for the data to be shared, then there is no adequate evaluation is there. So there must be done something more by the government. The next issue is independence. The short term of the members of the Data Protection Board, which is 2 years, with the scope for reappointment, may affect the independent functioning of the board. So one who has become the member cannot become the member again. This is not the clause. It means it will affect the functioning of the board. Yes or no? Next is multiple exemptions. Exemptions, quoting or citing national security, etc., resemble China's data regulation. And the next issue is related to Right to Information Act, RTI. The personal data of government functionaries is protected, making it difficult to be shared with an RTI applicant.
अब कोई ले नहीं सकता तो आरटीआई से मांग के ले लेगा, तो आरटीआई से भी नहीं मिलेगा। और जब डाटा को मिल ही नहीं सकता तो फिर आरटीआई का यूज क्या हुआ, जब हमारा अधिकार दूसरा खत्म हो गया। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना दोनों चीज, इधर से प्रिवेसी भी चाहिए, उधर से आरटीआई भी नहीं लग सकता। And there is no compensation, issue of no compensation. Section 43A of IT Act 2000 imposes an obligation on corporates to avoid damages. What is the meaning of damage and what is the meaning of damages? Damage means loss. But what is the meaning of damages? Compensation. So corporate जो है compensation देंगे to affected person in case of negligent handling of their sensitive data. However, the bill excludes the application of section 43A. इसका मतलब 43A के जो चीज है उसका बिल में कोई इंक्लूजन नहीं है, मतलब कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। जो अभी नागा सेना कह रहे थे कि अगर किसी का डाटा ब्रीच हुआ, इफ समवन डाटा इज ब्रीच्ड, तो उसके ऊपर 10,000 रुपए लग जाएंगे। अगर किसी ने गलत कंप्लेंट करवाई तो भी 10,000 लग जाएंगे। और नहीं तो सॉरी, कंपनीज के ऊपर तो 200-250 करोड़ रुपए लग जाएंगे। बट अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ है, अगर मेरा नुकसान, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कुछ नहीं, कंपनसेशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ फॉर डाटा प्रोटेक्शन लॉज? It has been copied from European Union model. It is called GDPR. So GDPR focuses on a comprehensive data protection law for the processing of data, personal data. Right to privacy is enshrined as a fundamental right that seeks to protect an individual's dignity and her right over the data that she generates. Digital Services Act focuses on issues such as regulating hate speech, counterfeit goods, etc. Digital Markets Act has defined a new category of dominant gatekeeper platforms and is focused on non-competitive practice. So these are European Union model, US model, or we have China model of security. So please read them yourself. I am not teaching them because I think as far as interview part is concerned, they are not meant for much use. So please read it yourself. I'll share the PDF with you in the Telegram. I'll share the PDF in the Telegram with respect to your own premium channel. Okay. If you are from bilingual wise, octopus, dark horse, swift, contender, Chanakya or rainbow. So what lies ahead? Data is new oil. It is the currency of the digital age. Yes or no? If you are preparing for some other examination where descriptive essay is to be asked, then you can start the essay by this line. Data is new oil. It is the currency of the digital age, and processing of personal data is the pivot around which today's digital economies revolve. Hence, proper regulation and guidelines by the government to enhance the data security is the need of the hour. Okay. So this is all for data protection bill. I will upload this very soon. Those who want to get the video and also those who want the PDF, I will upload it in the Telegram. Okay. Anything to ask? Anything to say? Okay. So how many of you have not attended the 1 p.m. session today? Just tell me. I have described a few points at 1 p.m.
there were two concerns which I addressed during that time. The first concern was related to the practice of mock interview or practice before mock interview. Before you, uh, before coming to me, please do practice as much as possible. There are three types of practice you can do. Personal practice through mirror or the back camera or the front camera of your mobile phone. Second thing, you can arrange your siblings, your friends, your family members just to get interaction. Provide them the questions. They will ask the questions and you will give the answers. They will just give the feedback where you were closing the eyes frequently or moving your eyes or nodding your head or your speaking pace was too fast. They will just give the review related to that. And the third thing is, before coming to me, just look at the tree, just look at the sky, just look at the sparrow and treat them as an interviewer. Any unknown face, any unknown thing, any unknown living or non-living entity. Just take this bottle of Fanta and tell them each and every answer. Okay. And after giving all these things, and you have to practice it 3 times a day. You can make 15 minutes chunks in the morning, in the daytime, and in the evening. Or you can make 2 chunks, half an hour in the morning and half an hour in the night or evening. If you are not practicing them religiously, then your mock, during your mock, you will be mocked. आपके मजे लिए जाएंगे. And you will certainly get 20 and 25, not more than that. But you will be surprised and flabbergasted to know that even in our batch, people are getting 40 out of 50 marks. And truly, I want to share one personal thing, which can never be revealed to you, even after your retirement from Intelligence Bureau. But the session is on record, I will not share it. After the conclusion of my words, I will share. Okay, so one person is saying, sir, what is the maximum marks we get? You can get 42, 43, 45. You can get 45 marks also. And the second concern was related to your tier 2 copies have been checked yesterday. Not specific SIB, but in aggregate. And on 18th of August, there is a meeting. When the panel will be decided, names of the IPS officer who will be the head of the interview panel. In Delhi, there must be like more than 7 or 8 panels. So if they need more than 7 or 8 panels, then at least 7 IPS officers must be there. And one IPS officer must be accompanied with 3 or 4 other panelists. And those panelists must be at least DCIO. So they want 1 IPS and 4 DCIO, means 5 person in one panel. And there must be at least 80 panels or 70 panels all over India, or at least 50 panels. Then how many personals have been engaged in interview process? At least 200 to 250, and they are critically important for national security. So hope for the best. In September month, something great or good will be there. I don't know the first week or second week or the third week, but yes, in the September.
take the middle path. Okay, now come to the next point. Nagasena. Okay, so this is all from my side. Thank you so much.